Hey, good evening. मेरी आवाज साफ आ रही है? Are you able to hear me? Are you able to? Wait, you're not able to see me yet. I understand that. But मेरी आवाज साफ आ रही है, right? Hey, Radhika. Hey, Kins, Kavya, and Rajput ji. What's up? As you guys wanted, we are here at a later time, which will hopefully fix all those buffering things that you guys had issues with. Good evening, Poonam. What's happening? Tell me, हाँ, अगर फिर से buffering करता है, please बताना. We'll have to really write a mail to YouTube or something if that happens. Khair, let's continue our discussion on dipole, moment, and Fajan's rules. Okay, we'll look at a few homework questions as usual. Same thing. Description mein sare links have all the chemical bonding sessions so far. I've got a couple of more left and we're almost done. Yeah, wow. Kafi humne cover kar liya just in 6 sessions. Today's 6 session. We're going to be finishing up dipole moments this and then next one. Kab hai aaj Thursday na? हाँ, Tuesday पे we will continue MOT and then practice sessions. ठीक है? All right. Hey, Devanshi, what's up? What's up? आवाज साफ आ रही है, right? All that's good. Hey, Loveleen. Yeah? All right, sweet. Homework सवाल थे कुछ जो आप लोगों ने आंसर दिए. Let's explore those and we'll start with the session right away. Choose a correct statement regarding ethine molecule. Ethine यानी कि C2H2. Why are we talking about ethine? In the last session, we spoke about sp, sp2, sp3 and all of that, yeah, in the previous couple of sessions. So उसी से related है, yeah, hybridization basically. And bonds being formed, sigma and pi bonds, etc., etc. That's what's being tested over here. So dono ideas, sigma pi bond as well as hybridization. What do you think the answer is to this one? Okay, great. Hey Vaishnavi, what's the answer to this one, guys? थोड़ा सा cover हो गया था. One carbon is sp hybridized and the other carbon is sp2 hybridized is what this second one is saying. What do you guys think is the answer to this? Huh? So draw the structure. कोई आंसर दे रहा है? Is anyone going to try this out or do you want me to solve this for you? Oh, come on, this is a homework question. काफी straightforward question, right? Ethine, it's all right, it's all right. कोई टेंशन नहीं है, देवांशी. As long as you guys are watching the sessions afterwards and it's helping you, that's great. It's okay. Doesn't matter live हो now. Answer दोस्तों, what is the answer to this one? What are you waiting for? अभी बताओ. अगर homework नहीं किया तो कोई problem नहीं है, but अभी तो बताओ. What is the solution to this one? A, B, C या D? 4 options, easy ones. Ethine मतलब कि सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है between the two carbon atoms. Okay. और बाकी कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? I need to count sigma bonds, right, to get hybridization. That's the main idea. Through Vesper theory, through VBT, etc. Everyone was talking about just sigma bonds that give you both the hybridization as well as the shape. The double and the triple bond just make the shape a little shorter, longer. Bond length को फर्क करता है. Bond length के बारे में हम लोग अगली बार बात करेंगे. Yeah. Hey, क्या हुआ दोस्तों? What happened? Answer तो बताओ. What are you waiting for? Hello? What do you think the answer to this is? सब लोग शांत हो गए, अभी सब गुड इवनिंग हेलो हाय कर रहे थे. आंसर बताओ. आई एम नॉट गिविंग द आंसर टू दिस अंटिल यू गिव मी एन इनपुट. दिस हैज टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन. नो, सब लोग को सुनाई दे रहा है, राइट? नो, व्हाट यू कॉल इट, बफरिंग एंड ऑल दैट वो नहीं हो रहा है अभी, राइट? ओके. हे शुभाश्री, व्हाट्स अप, न्यू पर्सन, ग्रेट. ओके, शुभाश्री सेइंग ए. ऑलराइट, a lot of you are saying A. Okay, ठीक है. Poonam, Anita, Radhika, and Vaishnavi also going with A. Subhashi removed the question. Okay, ठीक है. Anyway, let's just draw this out, right? This is pretty straightforward. Yeah, absolutely right. I think that one should work. A should definitely work. You've got one sigma bond, two pi bonds, and they're both sp hybridized. So yeah, A is the right answer. Good work, folks. And Stuti and Raghavendra got this right in the comment section. Great. अगला सवाल देखते हैं. In the hydrocarbon, blah 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 blah, बड़ा सा हाइड्रोकार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 और एक आइन है. कर लेना यार nomenclature. 6 carbons. There's a triple bond, there's a double bond, etc. etc. The state of hybridization of carbons 1, 3 and 5 are what? Tell me please. Chat में बताइए. Good job on that, Vaishnavi, Radhika, Devanshi, Poonam, as well as Subhashri, who for some reason retracted their answer, but the answer was absolutely correct. इस वाले का क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? What do you think? Yeah? Hybridization, remember, you just have to count all the sigma bonds being formed by the carbon in question. ठीक है? So I'll give you a hint. Let's talk about 4. Okay, I will not talk about 1, 3 and 5 because 1, 3, 5 तो आपको बताना है मुझे. 4 में क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड इस तरफ, एक सिग्मा बॉन्ड इस तरफ और एक और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे. डोंट फॉरगेट टू काउंट द हाइड्रोजन. तो इसमें है 3 सिग्मा बॉन्ड्स, राइट? तो 4 का होगा sp2. क्यों 3? See, there's 1s and 2p. हो गए 3, hence this must be sp2. ठीक है?
यही आइडिया है, यू हैव टू अप्लाई टू ऑल थ्री, दैट्स ऑल। ऑप्शन सी होगा, राजपूत जी बोल रहे हैं। अच्छा, एज वेल एज देवांशी, एक्सलेंट वर्क, एक्सलेंट वर्क, ओके देवांशी एंड hold on, did I spell that correctly? Let me spell that properly. Devanshi as well as Rajput giving us the answer to be SP, SP3 and SP2. Let's check that out. Let's check that out. 4 वाले को थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि वो तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था। Let's look at what is important. There are 2 sigma bonds here, so this must be SP. Excellent work on figuring this out. और इस SP से figure out करने से ही तुरंत, because MCQs है, right? You mark off options A and B, and that's the beautiful thing about MCQs like this, right? All you have to do उस पहला वाला figure out करो और उसे देखो A और B option हो गए cancel out. Now you only have to decide between C and D what the right answer is, and between these two if you just see कि देखो ये दूसरा वाला कार्बन क्या होगा, दूसरा मतलब एक्चुअली तीसरा वाला नंबर 3 that has 4 sigma bonds, 2 carbons के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, that is sp3, and you've got the answer to be C already. Yeah, excellent work, excellent work. देखो MCQs make life easy, huh? All right, yes Poonam and Vaishnavi, good evening Abdul ji. Yeah, Radhika absolutely right, option C, good work, good work. 4 sigma bonds, 3 sigma bonds. चलो शुरू किया जाए अभी का सेशन एक और सवाल के साथ। One more question. Which of the following is correct? The hybridization of Cl in ClF3 is sp3. ये वाला तो अजीब लग रहा है। खैर, the number of lone pairs and bond pairs in I3 minus are 2 and 2. देखो, ये situation solve करने के लिए you need to know the whole Vesper theory. That's all this is. A little bit of Vesper, a little bit of hybridization, VBT, दोनों चीज को मिक्स करके पूछ रहा है। तीसरा वाला शेप की बात कर रहा है, SF6 स्क्वायर बाइपिरामिडल, ये वाला तो मुझे सही लग रहा है एक्चुअली, just look and see, but I don't know. D, the hybridization of S and SP is sp3 in SO2. हाँ, ये at the first glance लास्ट वाला ऑप्शन सही लगता है क्योंकि देखो H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, so you'll be like हाँ यार SO2 में भी S का होगा sp3, but be careful. ध्यान से इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो and that's how you would solve this question. In fact, I think I've drawn all 4 of these structures काफी बार. If you have just attended my sessions, last 5 sessions, you'll be able to get this question very, very easily. Okay, Devanshi going with C. All right, all right, all right, all right. Let's see what happens. No pun intended. Yeah. What do the rest of you think? Vaishnavi. Oh, नहीं, जो तो पुराना वाला आप लोग C बोल रहे थे. Shall I go ahead and show you the solution? Shubhashri also going with C. Okay, all right, all right. Did I get that spelling right? Shubhashri. All right, sweet. Let's look at the structures. ClF3 is this, yeah? It's T-shape. Very, very clearly. I've done this multiple times with you guys. If you don't remember it, देखो, chlorine में होते हैं 7 valence electrons. Okay, out of which there are 3 bond pairs. तो बचे कितने 4 electrons. That is 2 lone pair. तो हो गए कितने 5. 5 मतलब sp3 4 plus 1 5. Okay, so 5 electron pairs हैं, bonded non bonded दोनों मिला के. तो this must be the shape. क्यों? क्योंकि equatorial is more stable. पूरा रिविजन ये मैंने बहुत डिटेल में किया है कि 120 डिग्री एंगल्स आर मोर स्टेबल देन 90 डिग्री एंगल, या बिकॉज रिपल्शन कम होता है 120 डिग्री एंगल में, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसलिए होता है ये टी शेप वाला। तो ये वाला गलत है, ठीक है। अच्छा, इसमें शेप की बात ही नहीं हो रही, खैर थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही थी, वो तो sp3 नहीं है, दैट्स sp3d। ऑलराइट, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ये भी मैंने किया था, आई टोल्ड यू इट्स नॉट इन द सिलेबस बट आई डिड इट एनीवे, राइट। उस पे हमने देखा था कि देखो I2 मतलब 2 आयोडीन एटम्स, दोनों के पास होंगे 4-4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ईच। अब I3 माइनस मतलब एक होता है, यहाँ पे ऊपर से आ गया ना, लेट्स इरेज दैट, दिस इज टी शेप। देख एक्स्ट्रा फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट आफ्टर द बॉन्ड इज फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही हो जाता है ना, तो एक नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब इंस्टेड ऑफ 4 इट हैज 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अगर 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटली है, उसमें से 2 है बॉन्डेड, ओके, एंड 3 दीज आर द बॉन्ड पेयर्स, 1 and 2 दीज आर द 2 बॉन्ड पेयर्स। तो 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, ये भी मैंने आपके साथ किया है। ओके, रिवाइज द वेस्पर सेशन, आई हैव डन दिस इन सम डिटेल, आई हैव डन दिस इन डिटेल। ये वाला सी राधिका, यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यस राघव, वैष्णवी, सी ही लग रहा है। ए और बी तो काफी भारी भारी महारथी ऑप्शन है, बट दे आर डेफिनेटली रॉन्ग। बट चलो अच्छा है, पूरा रिवाइज हो रहा है, वेस्पर एंड हाइब्रिडाइजेशन। शेप ऑफ SF6 इज स्क्वायर बाइपिरामिडल, एब्सोल्युटली राइट। नाउ इन दिस ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, ठीक है। हमने बात की थी कि एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ की लेंथ अलग होती है, राइट, रिवाइज दैट।
Please make sure that you remember that. That's important as well. But square bipyramidal में all bond lengths are equal, equivalent. ठीक है? And this is the right one. So what about this one then? Hybridization of S in SP is sp3? नहीं, it is not sp3. It is sp2 क्योंकि है इसमें 2 sigma bond and 1 lone pair. ठीक है? Which looks like this. क्योंकि this forms 2 double bonds to form octet with oxygen. Cool. All right. So क्या है ये? This is sp2 and not sp3. Excellent work everybody. Yeah. Bonding सही है, मजा आता है, right? So what do we know about the whole nature of these bonds, right? Covalent bonds दो टाइप के होते हैं. I'm sorry, bonding दो टाइप की होती है, covalent and ionic, right? What am I talking about? I'm getting to dipole moment. That's what we want to discuss right now. ठीक है? Covalent bond में होते हैं sharing of electrons. Ionic में there's transfer. Now here's the deal, right? There is a concept of covalent and ionic character of bonds. I told you in the last session, वो ending में हम लोग बात कर रहे थे characters, last session, अभी तो all blur है. S and P character of a bond, right? If you have a hybridized orbital, which is say sp has 50% S, 50% P character. sp3 has 25% S and 75% P character. इन दोनों में से sp is more ionic than sp3. थोड़ा सा revision that I've told you before, but just revising it again. खैर, anyway, so you have these 3 different types of bonds. ठीक है? Most of the things fall somewhere in between. Okay, ionic and covalent साथ में. It's not just all covalent or not all ionic. ठीक है? Hey, what's up? Hi, मुझे भी बोलिए. खैर. So there's always some covalent and some ionic character. Okay, and that is very interesting. Okay, so covalent bonds can be in a short way can be classified in this way. They can be classified as polar bonds or non-polar bonds. Okay, now both of these form the basis of organic chemistry. I have been saying this a lot. Okay, if something is non-polar, then it'll have some very fascinating properties. It'll probably be more reactive than things that, oh, ulta bola maine. If something that polar, it's probably going to be more reactive than non-polar molecules. Sometimes you want solvents that are non-polar. How will you decide कि भाई polarity किस चीज की क्या होती है? And let's take a step back. Polarity होती क्या है? What is polarity? Maybe you already know what polarity is, but a revision. ठीक है? Normally, okay, एक single bond की बात कर रहा हूँ. When I'm talking about one single bond, if is non-polar, if it's between the same type of atoms, like say Cl, या फिर H, or even N triple bond N or O double bond O. Okay, ये हो गया non-polar. Okay, and polar between different types of atoms like H and Cl. Remember, I'm talking about just between two atoms एक bond की. मैं पूरे मल्टी एटम सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, बस दो एटम सिस्टम की बात कर रहा हूं. ठीक है? So, and this non-polar behavior means that there is a symmetrical electron cloud. अब ये क्या वाला हुई? Remember, when we did atomic structure, in fact, when we even did hybridization, हमने बोला कि the hybridized orbitals are summation of the individual atomic orbitals that form this fancy thing. Remember that? Psi sp3 is psi s, 1s or whatever, जो भी था उसमें क्या था, 2s था ना, हाँ, 2s plus psi 2px plus psi 2py plus psi, जगह नहीं है, but you get it, so on and so forth. ठीक है? So this is what I was talking about. So this electron cloud is a probability of finding the electron. That's what it is. Okay? Or electrons are, it's perfectly, it's nice and symmetrical. This is not a theoretical idea. ये practical idea है. This electron cloud can be seen using some fancy equipment. Okay, there's a thing called ESR. Okay, electrostatic. So you basically make these things go through pass an electric field, and that the way that they reflect the electric field, उससे हमको पता चलता है, अच्छा, maybe it looks something like this. That's the general idea. ठीक है? Okay, I've given you some things over here, non-polar. What about polar? Look at this. It looks very different. Yeah, most of the electrons seem to be towards this B, and very few of it, बहुत कम है towards A. और A काफी छोटा भी है. You can see that the size also smaller. This is bigger, larger, and most of the electrons are towards B. Okay, so ये asymmetrical है, पहली बात. Asymmetrical दो कारण की वजह से, बड़ा छोटा. Okay, that's not the asymmetry bit. Asymmetry bit is बड़ा छोटे होने के कारण भी most of it is towards one atom. It so happens that this is a big atom in this case. Are you guys following what I'm saying? Chat is awfully silent.
which is a good sign because आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो. But just give me a thumbs up if you guys are following everything I'm saying so far. ठीक है? Polar covalent bonds. I've shown you two things over here. One is the size of the atoms. Second is the electron cloud that surrounds them. Asymmetry है क्योंकि electrons are more towards one atom. In this case happens to be the B atom. ठीक है? So in this scenario, H or F, मतलब कि this could be H, this could be F, this could be H, this could be Cl. हाँ, this makes sense. हाइड्रोजन बहुत छोटा है, F बहुत बड़ा है, और F is a lot more electronegative than hydrogen, इसलिए it pulls electrons toward itself. है ना? Beautiful, right? Beautiful idea. All right, great, great, great. So let's talk about how to quantify this. Numbers से हम लोग कैसे देखेंगे? And ये थोड़ा सा introductory idea है numbers में. Maybe if you do labs later on, when you play around with biomolecules and all of that, वो आप लोग करेंगे. उसमें शायद ये use आए इस चीज को. ठीक है? So an electric dipole is basically a pair of equal and opposite charges separated by a distance. Mu is the dipole moment, and between the two charges and the distance, अब इन दोनों को multiply करो Q into D, that gives you the value of mu. ठीक है? It's as simple as that. Maybe you already studied this in physics. And the deal is that this is very interesting, right? एक छोटा size is very important of the thing that doesn't like electrons. Say chlorine is a thing that likes electrons. Okay. So there's a concept of polarization that happens. Polarization मतलब because Cl का size बहुत बड़ा है and hydrogen really doesn't like electrons. Like, take them away, take them away. Hydrogen keeps pushing electrons towards chlorine because size बड़ा है. Hydrogen size बहुत छोटा है and really doesn't like electrons. So there is a polarization happening. मतलब कि towards one side of chlorine सारे electrons आ रहे हैं, towards the other side of that chlorine कोई electron नहीं है. तो ये है polarization. जैसे सोसाइटी में polarization होते हैं ना, दो लोग बिल्कुल अलग अलग आइडियाज होते हैं, पोलराइज, पोलर ऑपोजिट बोलते हैं ना. ठीक है, वही सेम चीज यहां पे हो रही है. ओके, सो दिस इटसेल्फ एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन सम डिस्टेंस. देयर इज अ डिस्टेंस एंड देयर इज सम चार्ज Q प्लस Q माइनस. देखो वही सेम चीज जो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको दिखाया था वही यहां पे हो रहा है. ओके, ऑलराइट. हे एडन, हाउ यू डूइंग? लॉन्ग टाइम. इसका यूनिट कैन बी ईदर डी बाय or it can be another unit. There's this whole thing of what do you call it? The SI units also can be used for this. Here, I'm going to multiply the charge and the distance, and I get this value of dipole moment over here. Again, I'm telling you that this is an introductory idea. Okay, हम लोग इसको detail में numbers नहीं calculate करेंगे, but we'll get a feel of अच्छा, are compounds polar or are they not polar? That is what we will try and develop. That intuition is what we'll try and develop. तो चलो करते हैं वो intuition को develop. ठीक है? The main idea is that, okay, electrostatic units में ये है, and one unit of charge, one electron, you already know is this, and yeah, the same thing you get in terms of d by as well. Just some extra information, it will be there in description, you can note this down. इस पे ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे. अगर आगे तो make sure you take care of the units. Okay, Q into बस distance करना है, nothing else. This is a vector quantity. थोड़ा सा physics याद है? Do you guys follow this? Yeah, vector quantity क्या मतलब होता है? मतलब it has direction and it has magnitude. This is what you need to know to understand dipole moments. Okay, कुछ value होगी. That the value depends on Q, the charge, and the distance D. And direction? हाँ, direction कैसे करें? Let's define direction. Let's define direction by a crossed arrow. Okay, tail will be on the positive center, head towards negative center. इसका क्या मतलब है? H और F के बीच में हुआ bond. You know that the electrons are mostly towards this. That's why I'm putting a delta minus and a delta plus here. So although this compound is not ionic, it kind of develops a small sort of a tendency to pull electrons. इसलिए delta minus, वो छोटा वाला D, the Greek letter D, but छोटा वाला. Okay, all right. So the head points toward the negative center. मतलब this will be like this, and the tail. So this is the direction of dipole moment. ठीक है? और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड विल सिंपली बी दिस डिस्टेंस टाइम्स द चार्ज. सो क्लियरली अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा. दैट डजंट साउंड राइट. अगर डिस्टेंस बढ़ गया मतलब कि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो गया. अगर मॉलिक्यूल बड़ा हो गया तो डाइपोल मोमेंट विल बी गेट लार्जर. बट वो डिस्टेंस बढ़ने से कहीं ज्यादा इफेक्ट होता है चार्ज बढ़ने का. we'll see this. Yes, direction, magnitude, both. Exactly. So for HCl, you would draw the tail over here on H and Cl के ऊपर arrow जाएगा. ठीक है? तो
Now, let us explore. Then this is when things get interesting. Okay, we're going to explore the value of mu, dipole moment, for diatomic molecules as well as polyatomic molecules. Polyatomic molecules gets interesting. Diatomic तो straightforward है. Diatomic मतलब कि अगर सेम एटम दोनों से बॉन्ड कर रहे हैं तो पोलर नहीं होगा, अगर डिसिमिलर एटम्स है तो पोलर होगा, बस. ठीक है. ओके. So diatomic molecules में, which is easier, it depends on the difference in electronegativities and bond lengths. This concept of charge is easier in physics than in chemistry. क्योंकि physics में solid you have got a charge q q to q या फिर 2q या फिर 3q या फिर 4q. यहाँ पे चक्कर ये है कि this q is kind of partial, right? Delta plus delta minus. So we're going to have to depend on difference in electronegativity to see कि ये charge value ज्यादा है कि कम है, और that will also decide भाई कि ये distance ज्यादा है कि ये कम है. What do I mean? Let's see very quickly. It depends on how things are arranged in space. That was about the diatomic molecules. Okay. Polyatomic molecules में same idea. You have the bond dipole, and how many of those bond dipoles are there? This is where the whole idea of vector comes into the picture. Okay. Direction. जैसे आप normally vectors को add करते हैं. You remember that rectangular law of vectors? Yeah, I've got this vector, I've got this vector, है ना? इन दोनों को add करो तो उसका resultant बनेगा इस vector से, है ना? डू यू रिमेंबर दिस फोक्स? ये याद है फिजिक्स से? तो बहुत, आई थिंक ये पहले काफी पहले पढ़ाते थे, 10th में मैथ्स में पढ़ाते हैं, फिजिक्स में पढ़ाते हैं, याद नहीं आ रहा अभी. तो दिस इज पी एंड दिस क्यू, ये वाला होगा पी प्लस क्यू. ओके. एंड दिस एंगल इज पी क्यू कॉस थीटा एटसेट्रा जो भी है. ठीक है. यू रिमेंबर दिस? यस, नो, मे बी? ये चीज याद आ रही है? मृणाल जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है. नो, आई नो, मैंने तो देखे हैं वो सेशन. ये याद आ रहा है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जस्ट ट्राई टू टेल यू कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना फर्क नहीं है. साइंस इज साइंस, राइट? सो खैर, यू गॉट सेम थिंग यहीं पे लिख रहे हैं. अगर द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी बाय गिवन बाय दिस गाय व्हिच इज ब्ला 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 ब्ला, दिस यू हैव लर्नड इन फिजिक्स इन डिटेल. ठीक है. इस आइडिया पे सवाल तो नहीं आते हैं इन नीट, दे हैव नॉट कम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट जस्ट इन केस वी जस्ट वांट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. चलो, नाउ लेट्स लुक एट थिंग्स क्वालिटेटिवली मतलब कि एक अंदाजा. For example, okay, if I have say if I have a thing called AB2, this is the molecule AB2. ठीक है. A यहाँ पे बीच में और B उसके इसके. So this could actually be water, right? This could be water. तो उसका dipole moment कैसे होगा? Assuming कि this is say positive, this is delta negative, then I would say कि देखो ये angle ये सब हो रहा है, but something very interesting happens. Yeah, इसका जो resolution होगा, you know the idea of resolution of vectors, this can be resolved as this. Okay, this plus this. I'll change the different color here, and this one can be resolved as this plus this. And you see conveniently ये हो जाते हैं cancel. या ऊपर नीचे वाले हो cancel और ये दोनों हो गए add, तो net direction हो गया dipole का this. Do you understand this? Parallelogram law of physics में है, vector chapter में है. Excellent वैष्णवी, thank you. Maths में भी है, देवांशी से, yes, दोनों में है. फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब सेम ही है. ठीक है. ये समझ में आया? This is the most important idea of dipole moment. Please tell me if you've understood this. If you have, we will go ahead. If you haven't, I'll explain again. Did you understand this? Yeah? पहले मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है. देन मैंने बताया कि उसको रिजॉल्व भी कर सकते हो. You can get it back to those, right? Because technically this vector, ये जो डायरेक्शन है जो भी है, कहां से आया? आप इसको x और y एक्सिस में ड्रॉ कर दो. Okay? Get a feel for it. And then cancel out the things that go away. So which is why you say कि अच्छा, इस चीज का equivalent is going to be something in this direction. ठीक है? Because these vectors are in this direction separately. समझ में आया? Radhika, which part do you want me to repeat? Shall I show you with an example? Radhika, I'll tell you what I'll do. मैं एक सवाल, ये तो abstract होगा थोड़ा, एक एक्चुअल मॉलिक्यूल के साथ दिखाता हूं. Maybe that will help. Hey, good evening, Stuti. Hey, Stuti has been answering all the questions on the chat, on the comments. This is important. If electronegativity is more than that of B, मतलब this is negative, this is positive. Radhika, एक काम करता हूं मैं. I'll show you an actual molecule. Maybe it will be easier to understand. ठीक है? इसको देखते हैं. CH2Cl. Actual molecule. काफी चीजें लिखी हैं, धीरे धीरे बताता हूं क्या हो रहा है. Clearly, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा भाई? ये पहले लिख लेते हैं. हाइड्रोजन इज सबसे कम होगा हाइड्रोजन का, राइट? देन कार्बन एंड देन क्लोरीन, राइट? सो मतलब कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ.
हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में होगा डायरेक्शन इस तरफ। विथ मी सो फार? मेरे सर के ऊपर जो लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्लोरीन की सबसे ज्यादा, राइट, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन। हेंस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड इज गोना लुक लाइक दैट। द पोल डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कार्बन और क्लोरीन के बीच में होगा ये, ठीक है, ओके। नाउ क्या बन रहा है यहां पे? बन रहा है टेट्राहीड्रल, ओके, 3 हाइड्रोजन एटम्स और 1 क्लोरीन एटम इधर, ठीक है, ऐसे ही बना दिया अभी। तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा ऊपर, इसका भी होगा, तीनों का होगा ऊपर, विच विल मीन दैट, देखो ये जो येलो, ये जो हरे वाले हैं, इफ आई रिजॉल्व दोज, देखो ये 1 2 एंड 3, सो लेट मी पुट 1 फर्स्ट। 1 का हो जाएगा ये प्लस ये, है ना, समथिंग लाइक दैट, समवेयर लाइक दैट। 3 का हो जाएगा सिमिलरली ये प्लस ये, और 3 और 1 का हो गया कैंसिल आउट। सिमिलरली H का भी होगा समथिंग लाइक दिस, and then again a little bit of this, right? So what happens essentially is कि looks like कि more or less everything is going just upwards. ये जो left और right वाले हैं seem like they are cancelling out. So it is, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई इसका mu is not equal to 0. Okay, the mu is greater than 0 and it looks like the mu is going in the upward direction. इस डायरेक्शन में होगा इसका dipole moment. Radhika, is this better? Or did this get even more complicated? What do you think? Do you want me to go back and explain that पुराने वाली चीज फिर से? ये वाली चीज समझ में आई? ठीक है, दो चीज मैंने बताई, एक तो क्लियर है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरी चीज किस डायरेक्शन में म्यू जाएगा, दैट आल्सो यू कैन फिगर आउट यूजिंग, पहले राइट डाउन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड, ओके, एंड देन फिगर आउट कि भाई डायरेक्शन क्या होगा। हमारा फोकस है कार्बन यहां, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग कि आई वांट टू फोकस ऑन द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड क्लोरीन। मैंने पहले साइन लिख लिया, फिर उसके बाद आई ड्रॉ दिस, ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नाउ थोड़ा और गूगली करते हैं, little bit, yes, towards chlorine from carbon and towards carbon from hydrogen, because hydrogen is less electronegative than carbon, ठीक है। अब now there is a time for a googly। भाई क्रिकेट में क्या चल रहा है, कोई स्कोर देख रहा है क्या? Man, looks like we're going to be facing Australia, huh, in the final on Sunday. Can dipole moment be 0 for polyatomic atom? Now polyatomic compounds, हमने एक पॉलीएटॉमिक कंपाउंड देखा which was CH2Cl, उसमें तो नहीं था। What about this? Let's see. For a non-polar molecule, the main thing is this needs to be 0, मतलब कि डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, सब चीज nothing. For a polar molecule, obviously it won't be, ठीक है। डायटोमिक के लिए सिंपल है, डायटोमिक के लिए if you have just say Cl and Cl, it's not going to be 0. If you have Cl and H, not going to be 0, this is going to be equal to 0, ठीक है। पॉलीएटॉमिक में things get a little interesting, पॉलीएटॉमिक में things get a little interesting, ठीक है, we'll look at that. पॉलीएटॉमिक में because of this spatial arrangement things can get interesting. Let's look at that. See, this is the easiest one. You've got a linear compound. linear compound कौन सा आता है? बहुत आते हैं, देखो I3 minus CO2, और कोई आते हैं linear, और भी एग्जांपल दो, XCF2, any more? Think about it. All of these will have zero dipole moment. क्यों? They are linear and दोनों तरफ सेम एटम है, अलग अलग एटम नहीं है। I'll give you an example of linear compound जिसमें नहीं है HCN, here mu is not equal to 0, but in all of these mu is equal to 0. How? Exact equal and opposite direction में जा रहे हैं dipole moment. In this case we have assumed that this is slightly positive, this is slightly negative, इसीलिए arrow का direction इस तरफ है, ठीक है, cool? Any doubts on dipole moment when it's equal to 0 for a polyatomic molecule, specifically AB2 type का molecule? Yes, HF3. HF3 क्या होता है देवांशी? Do you mean BF3? I didn't understand that. CO2, Raghu, absolutely. Raghu क्या होता है? Raghu. Yes, CO2. Yeah, did you follow when I said HCN का नहीं होगा 0? Did you समझ आया थोड़ा सा? Maybe C triple bond end और H, इसका होगा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका होगा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, वो कैंसिल आउट नहीं होगा ना, है ना, ऐड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, या सोचना, बाद में सोचना इसके बारे में, खैर, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री में ये हो जाएगा ये। एंड अच्छा, आई मीन देवांशी, यू आर सेइंग BF3, आई थिंक यू आर सेइंग BF3, राइट?
एक और रेगुलर ज्योमेट्री है AB3, एग्जाम्पल ले लो BF3. Think of this like an equilateral triangle. Equilateral triangle. Okay. यानी कि all of these, बोरॉन और फ्लोरीन में कौन सा होता है, ये ज्यादा है ना, तो इट विल बी दिस डायरेक्शन, है ना. इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ऐसे ही बनाते रहेंगे हम लोग. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन, ये तो क्लियर है ना. तो इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर बिटवीन थ्री पार्टीज. अभी हम लोग देखें टग ऑफ वॉर दो लोग के बीच में, इधर तीन, एक जा रहा इस तरफ, ओके मेरा हाथ बाहर चला गया, एक जा रहा इस तरफ, एक इस तरफ, एंड देन दैट वे, ट्रायंगल. या म्यू इज जीरो. ब्यूटीफुल इजंट इट. इफ यू डोंट सी इट राइट अवे, देखिए इसका है ऊपर, this if I resolve this is going to be downwards and this way, and this if I resolve this is going to be downwards and this way, है ना. तो these two get cancelled out and this gets cancelled out. You see that? This is the resolution bit. You should be able to identify this. भाई कैसे zero? Just resolve it. This was resolution of vectors. ठीक है? All right. Now, even in this regular geometry, CH4, for example, same cheez hogi. Now, instead of a 2D shape, you have a 3D shape. कौन सा 3D shape? Tetrahedron. What is a tetrahedron? आप बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एंड मैं आपको भी बता भी चुका हूं. यहाँ बीच में आ गया कार्बन, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन. See, everything we have studied so far, Vesper theory, VBT, is all coming together in this dipole moment वाला business. Yeah? It's all right, Lavanya. Good evening. Good to see you here. I have moved the session. Looks like कोई टेंशन नहीं है. Everybody is able to see clearly. कोई buffering नहीं हो रही है. I have not changed any setting in my part. We've just made the session at 7 o'clock. I hope सब कुछ clear हो रहा है. कोई buffering नहीं हो रही है. Yeah. All right. Sweet. So this seems to be working. All right. So look at this. Tetrahedron में like a regular geometry, इसमें भी mu हो जाता है 0. चलो एक quick सवाल लेते हैं. बहुत कहानी बताएंगे, एक सवाल भी लेते हैं. Which of the following has a symmetrical structure? Symmetrical मतलब कि भाई mu will be equal to 0. जल्दी से बताइए, सोचिए. Try it out now. Ved, what's up? Try this question, please. Lavanya, आप भी try करिए. It's all right if you came a little late. No problem. Try this question out. इसको try करें. All right. Ved is saying C. Anybody else wants to give it a shot? See, symmetrical structure matlab mu is equal to 0. Think about it. Think about it. All right, Devanshi and Poonam going with this one. ठीक है? और भी कोई जवाब दे रहा है? Yeah? Lavanya saying A. All right. Lavanya, close, but there is a better answer. Let me give you that hint. You're pretty close. PCL3. Think about it. Anjum. All right, Anjum. Great. Radhika and Devan and Vaishnavi also giving us answers. Vaishnavi. Sweet. All right. I'm telling you what. I'm going to draw these diagrams out and then you tell me if you want to change your answer or you want to keep it at these. PCL3 is just like NH3. PCL3 is just like NH3. It has 3 bond pairs. It has 1 lone pair. ये तो symmetrical नहीं हुआ. कैसे symmetrical नहीं हुआ? Oh, by the way, maybe मैंने आपको explicitly बोला नहीं, but lone pair always is going to be like a negative charge, no? तो electronegativity सब हर समय उसी के direction में जाएगी. It's going to be this. I didn't say this out explicitly, but ठीक है. Phosphorus और chlorine के बीच में, I think chlorine is more electronegative. Yeah, obviously chlorine is more electronegative, right? Not symmetrical. अगर यहाँ पे होता chlorine somehow, then maybe, but that's not possible. So let's not talk about that. PCl5 is interesting. खैर, anyway, नहीं, this is not it. PCl3 तो नहीं होगा. Lavanya, you see that? CH2Cl2 लगता है होगा, हो सकता है, but नहीं है, because it's a tetrahedron. And see, यहाँ पे this is the shape. It's not symmetrical. You see, कुछ ऊपर हो रहा है, कुछ नीचे हो रहा है, कुछ अजीब-अजीब सी हो रही है. C और Cl के बीच में, what is more electronegative? H is the least electronegative, then carbon, then Cl. Hence, I have drawn this like this. Any doubts? Any doubts? Anjum is saying option 2. No problem. Lavanya, कोई टेंशन नहीं है. Anjum, do you see why it is not option 2? CH2Cl2 लग रहा है कि हाँ यार, this could be, you know, nice and symmetric. But if you remember what I've taught you in Vesper theory, this is going to form a tetrahedron. It will not form a square shape, right? It will form a tetrahedron.
और देखो मैंने जानबूझ के ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा बनाई है, CH के बीच में बॉन्ड लेंथ is going to be greater than that of C and Cl, क्योंकि C और CH के बीच में थोड़ा वीक बॉन्ड है, C और Cl बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, थोड़ा छोटा होगा. आई हैव नॉट टॉट यू व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, बट पढ़ाएंगे ना बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सब पढ़ाएंगे. ठीक है, सो C इज नॉट राइट. यस लावण्या, शुभांश, शुभश्री, धारगवे एंड अंजुम, आर यू ओके सीइंग दैट B इज नॉट द राइट आंसर? पूनम एब्सोल्युटली राइट, D ही होगा. अब आपने देख लिया. तो देखो अगर B नहीं होगा तो D भी नहीं हो सकता, राइट? D भी नहीं हो सकता. Let's quickly draw these and we'll wrap this up by saying dekho D is beautiful and this is definitely going to cancel out. This is a regular geometry, hai na? Since ye regular geometry hai, we'll write that down. Regular geometry. So mu is going to be equal to 0 on this one. Sweet. So D is the answer to this. Agla sawal dekhte hain. Chalo. Ha, D is the correct. Good job, good job, good job. मैंने पहले सवाल दे दिया. That's how I do, right? Show and then tell. I gave you a question and I proved to you कि देखो lone pair it contributes to dipole moment. Absolutely it does, है ना? इसलिए A नहीं है. It's okay. I gave you a bit of a googly there, right? But it's a little bit of a theoretical idea because electrons का क्या size होता है, shape होता है, we don't know. We have no idea, right? Size of lone pair is not known, but you cannot quantify it. It will definitely contribute to the dipole moment. So you don't know कि भाई phosphorus और lone pair के बीच में what is the dipole moment? You don't know that. But overall molecule you can figure out its dipole moment. How? Put it through a machine. It will tell you the way it rotates, the way it moves in electric field will tell you the direction of dipole, and that's it. That's it. All right. Sweet. Yes. Yes, Anjum. Definitely. I'll explain option D फिर से. Anjum, option D को समझने के लिए, Anjum, I think you were not there when we were explaining this part. You see this, Anjum? I will take this to explain option D. A regular geometry. मतलब tetrahedron बन रहा है. What is a tetrahedron? This chap right here. Okay. मतलब think of this like a 3D equilateral triangle. Tetrahedron, right? This is like a 3D, what do you call it? Triangle, right? Equilateral triangle. So you have you have 4 equilateral triangles, okay? And बीच में है carbon. ये थोड़ा सा geometry वाला idea है. If you like geometry, तुरंत समझ में आ जाएगा. If you don't, it may be a little weird, but it's okay. I've explained it another way also. कि देखो, ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे. ठीक है. This is going this way, 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 and this they will all cancel each other out. Okay. That's it. And because all these individual dipoles cancel each other out, overall molecule का dipole moment नहीं होगा. Anju, I hope that helps. Thank you, Devanshi. Thank you. Let's go on to the next idea, which was the idea of electron जो मैं बोला. ठीक है. Now, so here, वही Anjum, to forward, वही चीज हम लोग बोले थे. CH4, right? Which is the similar as CCl4. Not same, but similar as CCl4 because mu is equal to 0 for both of these. But when you take NH3, it's not. Okay, क्योंकि देखो NH3 में इस तरफ नहीं है डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में है. Because always, remember, whenever there's a lone pair, right, the arrow is always going to be towards it from whatever element. Some element to, because lone pair is just electrons, right? So hamesha arrow is going to be in this direction. Cool. This is non-zero and I know its value because I put it in a machine. That's it. हमने कुछ calculate नहीं किया कि अच्छा इस bond का इतना calculate. Put it in a machine. Machine will tell you. All right. Cool. Here's a quick question. Why does ammonia have a higher dipole moment than NF3? ये बहुत मजेदार सवाल है. Hey circle, love you too, man. All right. Shrabani, आपका नाम Shrabani है. I will try and remember that Shubhashri wala email ID. Shrabani. All right. Cool name, man. You guys have funky names. I haven't heard of these names before. Why does NH3 have a higher dipole moment than NF3? ये सवाल बोर्ड्स में भी आ जाता है, काफी जगह आता है. How do you do this? How do you do a question like this? From first principles. We'll draw the diagrams out. ठीक है? So this right here is NH3. This right here is NF3. The main thing is the electronegativity differences. ठीक है? Between hydrogen and nitrogen, this is going to be the arrow. ठीक है? Direction. Between nitrogen and fluorine, this is going to be the size of the arrow. And obviously,
between nitrogen and lone pair, हमेशा it's going to go in this direction. ठीक है, ये तीन चीज आपको रखनी है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. यूजिंग दिस यू कैन सी क्लियरली कि इसका ओवरऑल है ऊपर और इसका ओवरऑल है नीचे, बिकॉज ये जो नीचे है तीन, all of these three going down are kind of slightly getting cancelled out by this guy. Okay, so this upward thing messes with these three things. ठीक है, इसीलिए actually इसका size थोड़ा छोटा, I'll make this a little smaller so that it will be easy to understand, because the vector thing is supposed to have that direction ना. अभी तो लग रहा है कि दोनों equal है, but that's not the case. One second, I think this diagram will be a lot more clearer if I reduce the size of the second वाला yellow जो line है बड़ी सी लंबी सी, right? This will make a lot more sense there. Can I do that here? Oh, this is like an image, I think. Okay, we can get a little creative. We can get a little creative and we'll try and do something. Hold on. हम लोग क्या करते हैं इसमें? I have a nice dark blue pen which I'm just going to use to color over this to show you guys that देखो इसका dipole moment is smaller. ठीक है, and I have a yellow pen as well to show you that this is the dipole moment. ठीक है? Now does it make sense? Yeah. It is in the opposite direction और जो है size भी कम है. Size नहीं, sorry. Magnitude also is smaller. Okay, you can see that right here. The magnitude of this is just 0.24, 1.47. Do you understand this? TLA, Lavanya, समझा नहीं आपकी बात. All right, Anju, absolutely. Direction वैसे, perfect. I'm great. Iruma, how you doing? With due direction, absolutely beautiful. Let's look at this question now. Which of the following is a polar molecule? इसका बताइए आंसर क्या होगा आपके हिसाब से. चार ऑप्शंस हैं. SiF4, नीट 2013 का सवाल, बाप रे. XeF4, BF3, SF4. If you have done Vesper theory, 10 सेकंड में हो जाएगा सवाल. If you attended my session on Vesper theory and VBT, literally 10 सेकंड में हो जाएगा. You see the option like, हाँ यार ये तो यही है. That's it, done. I'll tell you how also. Try it out. Try the question out. I'll tell you how to do this quickly right after. Okay. Iruma is saying C. All right. Sure. What do the rest of you think? जल्दी मत करो यार. Just because I am saying 10 सेकंड ऐसे, I'm just trying to आपको थोड़ा उत्साहित करने के लिए I'm saying 10 सेकंड. You take your time. It's all right. टाइम की कमी नहीं है लाइफ में, बहुत टाइम है लाइफ में. अरे बाप रे, बहुत लोग बोल रहे हैं सी. Which is a polar molecule? अरे BF3 कैसे पोलर है यार? Come on. Okay. यार A और C को कैंसिल करते हैं. A और C मत बोलो तुम लोग. Anything else I'll accept. A और C I will not accept. Why? What is this यार? A is a regular geometry. है ना? This is also regular. SiF4 is the same as CH4, क्योंकि सिलिकॉन तो कार्बन के नीचे आता है ना? और BF3, यार BF3 को हमने कितनी बार किया है? BFF, equilateral triangle guys. This is an equilateral triangle, so C तो नहीं होगा. C तो नहीं होगा, तो B या D? Okay, Vaishnavi is saying B. All right, Raghu is saying D. Raghu is saying D very emphatically, so I will write his name here and say Raghu is saying D. All right. So is Devanshi. All right, sweet. और कुछ लोग बोल रहे हैं B. Shrabani and Vaishnavi are saying B. ठीक है, थोड़ा सा वेस्पर पढ़ लो दोस्तों. That's my suggestion to you. देखो SiF4 is clearly regular geometry. ये तो नहीं होगा. ठीक है. XeF4 also is like this. It's square planar. Okay, क्यों? I told you Vesper से 10 सेकंड में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि if you have studied Vesper, you'll know कि XeF4 में 4 हो गए बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, और वो दोनों लोन पेयर भाई साहब घूमेंगे. They're like, I am free. जितना दूर हो सकता है हम एक दूसरे से इतना दूर रहेंगे. Which means they are in their axial. Okay, and these are in their sort of equatorial. ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया. तो ये भी नॉन पोलर हो गया. You see, it gets cancelled out. So this is non polar. C तो definitely non polar, इसमें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है. D, look at this. This is seesaw. Yeah, SF4. SF4 सल्फर में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें होते हैं 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, यानी कि sp3d. sp3d में एक हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन में. Why equatorial? Less repulsion, same as ClF3, है ना? ClF3 था T shape, ये हो गया seesaw shape. ठीक है. अंजुम, are you all right? This is D.
Yes, Raghu, absolutely right. D has a SF4 has a lone pair. Dhargave, I hope you understood why the answer is option D. ठीक है, and not B. It's okay. थोड़ा मुश्किल सवाल मैं आपके साथ कर रहा हूं. Well, मैं क्या कर रहा हूं? नीट ने दिया है 2013 में, वही सवाल हम लोग कर रहे हैं साथ में. ठीक है? SF4 is the right answer. It's all right. अगर अभी ठीक से नहीं हो कोई टेंशन नहीं है. Once you understand, you're good. ठीक है. So I can predict the geometry using this whole dipole moment idea. ठीक है? अगर dipole moment zero है तो symmetrical molecule होगा. Okay, अगर non zero है, non zero लिखा है, तब asymmetrical molecule होगा. इसका क्या मतलब है? Look at this. Okay, नहीं, ये तो बिल्कुल ही तहस नहस हो गए. रुको, slide number 65. Something weird happened. So usually we use online version of the files. Okay, but just to make sure nothing gets messed up, I save the files. I make them offline files, and then for some reason of late, they've started being really messed up. Care, I will quickly fix them on the fly for you while we do this, and I will also explain. ये छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत बग करती हैं because these notes are what you are going to use to study for your NEET और JEE और जो भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये नोट्स तो बिल्कुल पक्के होने चाहिए, राइट? That's why I take the time even in the middle of session अगर कुछ रैंडम होता है तो तुरंत तो फिक्स कर देंगे. खैर, लेट्स गो बैक टू दिस. इसमें क्या बोल रहे हैं? लावण्या, which part? ये वाला पार्ट? what do you want me to explain, लावण्या? SF4 वाला क्या यार, वो वेस्पर वाला प्लीज पढ़ लेना. SF4 has 6 valence electrons, 4 bond pair, 1 lone pair, as Raghav said. Please watch my session on what you call it, Vesper theory. वहां पे आराम से होगा, ठीक है? वहां पे देख लेना please. I will continue with this idea. Hold on, lot of random windows opening up. Okay, that question I understood. मैं समझ गया. I did explain, Lavanya, but if it did not make sense, maybe you need to revise this whole concept of VSEPR theory, right? उससे ये वाला पार्ट आसान हो जाएगा. You understood how A, B, C are not correct, yeah? B and D में basically थोड़ा confusion हो सकता है, but that you understand through Vesper theory, okay? कि कितने bond pair, कितने lone pair हैं, and where do you put them equatorial में, axial position में. We've done that in detail in the Vesper theory वाला session. Please उसमें देख लेना, ठीक है? अभी के लिए I'm going to move on to the next one, or you just ping me, Lavanya, on I teach Chem and I'll help you out maybe on a Telegram or a Discord, ठीक है? I teach Chem. Oh, यहाँ पे कुछ और लिखा गया, ठीक है? Ping me and I'll help you out maybe. All right, sweet. Here, in these first two, you've got symmetrical molecules, hence mu is 0. And ये asymmetrical है. Asymmetrical मतलब mu is non-zero because देखो, ये जो Cl bond है, ये बहुत ही अलग है as compared to this H bond. Okay, all of this leads to a downward, what you call it, dipole moment. You see, all of them are pointing नीचे की तरफ. चलो एक सवाल देखते हैं. The geometry of H2S and its dipole moment are, बताइए. हड़बड़ी में गड़बड़ी जाती है. होता है. ये वाला सवाल बताइए. The geometry of H2S and its dipole moment are, what do you think? क्या सोचते हैं आप? What do you think? Geometry of, कहां गया सवाल? यहां गया सवाल. हाँ, H2S बताइए. I'll tell you what I'll do, Lavanya. We will do Fajan's rule next time. I'll explain फिर से if you guys want. So we have just 10 minutes left, right? एक दो सवाल हैं. मैं सोच रहा हूँ Fajan's rule भी करते हैं, but I think we'll take a lot more time to do Fajan's rule, right? We'll do that अगले session में. If you guys have any more questions, we can talk about it now. Lavanya or anybody else. Okay. हाँ, Raghav is saying A. Okay. ठीक है. Anybody else? Dhargave. I have a good friend called Bhargav. Sounds familiar to that. So H2S is very similar to H2O. That's like equistructural or whatever you want to call it, right? Sulfur and oxygen are in the same group in the periodic table, so that helps. Yeah. Poonam is also saying, Poonam, he changed the answer to C. Poonam is saying this thing. Okay. Do you guys still want to say C and D? Okay, still saying C and D. Okay. Raghu. Listen to Raghu, guys. Listen to Raghu. देखो. Yeah. Listen to Raghu and Iruma. क्यों? देखो यार. I told you, H2S is just like water. वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्शनल था, ठीक है? SO2 भी अजीब सा है. SO2 भी इसमें आगे, actually I will not solve it, I'll show you later on. खैर, H2S looks like this.
इट्स अ लॉट लाइक वाटर इटसेल्फ, है ना. इट इज टेट्राहीड्रल बट इट इज बेंट शेप, ओके, विच इज एंगुलर एंड नॉन जीरो, क्योंकि वो तो आप देख ही सकते हो उसमें. एच और एच अगर ड्रॉ करूं तो ये हो गया डायरेक्शन इसका, ये हो गया डायरेक्शन इसका, है ना. ऑल ओवर द प्लेस. म्यू इज डेफिनेटली नॉन जीरो, हेंस ए शुड बी द आंसर. एक्सीलेंट वर्क रघु, एक्सीलेंट वर्क. यस, बेंट शेप इरुमा, यस, एंगुलर बेंट सेम चीज होती है. डू यू गाइस सी दिस? इट इज नॉट लीनियर. ठीक है, गूगली, बहुत गूगलियां हो गई. या डाइपोल मोमेंट इसलिए मैंने एंड में किया. आपकी एनसीईआरटी में डाइपोल बिल्कुल शुरू में दिया हुआ है. हाउ डू यू डू डाइपोल विदाउट नोइंग वेस्पर थ्योरी, विदाउट नोइंग वीबीटी. भाई शेप जब बना ही नहीं सकते हो आप तो डाइपोल कैसे पता चलेगा, है ना. इसलिए मैंने इस ऑर्डर में किया. आई हैव चेंज्ड इट अप. यू मे बी लाइक व्हाई इज ही चेंज द ऑर्डर ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी इज अ ग्रेट बुक, इट्स अ लवली बुक, बट कुछ चीजें बिकम इजियर फॉर यू इफ आई जस्ट मिक्स अप द ऑर्डर अ लिटिल बिट. या देवांशी, इट इज ए. वैष्णवी, excellent. So to summarize everything on dipole moment, Q depends on change in delta electronegativity, right? Q and D में से Q होता है dominant factor, which means कि देखो Q into D is what I'm multiplying. D is not going to become 2D to 3D, okay? बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, but charge can become 2Q और 3Q. एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 हो गया, 3 हो गया, इसलिए बहुत बड़ी बात होती है. So electronegativity difference depends on Q and on mu for sure. But look at this, look at this, look at these values. Okay, यहां पे क्या हो रहा है? D बदल रहा है. D is increasing, right? In this case. But यहां पे what is happening is कि electronegativity कम हो रही है. Okay, two things are happening. Electronegativity difference is decreasing and D is increasing. दोनों चीज हो रही है. तो ये फैक्टर हो रहा है dominate. This is dominating. Okay, because the electronegative difference between H and F is a lot more than HNCl and HNBr and all sorts. You see that? दो चीजें simultaneously हो रही है. D is increasing and electronegative difference कम हो रहा है. And you can see that ये है dominant factor. Okay. Look at this. Another idea. इन दोनों में क्या है? What is the main thing here? Bond length is going to be what takes priority over here. ठीक है? मतलब C और Cl versus C और F के बीच में. ठीक है? Which is why order यहाँ पे हो गया उल्टा. You would expect कि पहले F होगा, then Cl and then Br and then I, but this changes because F बहुत छोटा है. You know that, right? F का चक्कर हमेशा random चलता ही है. Where did I get this PPT? With in the description of this video, I'll put the notes. You can also join the Telegram channel. If you description आप थोड़ा expand करोगे, it will give you the Telegram channel. It is called NEET Aakash BYJU'S, I want to say. Hold on, let me put that in the comment and that'll be helpful. Give me a second. खुला ही हुआ है Telegram. You guys are on Telegram, right? Everybody else who's watching this right now? If you aren't, please join this. This is where we give you all kind of updates, PPTs, etc., etc. Please join that. Yeah. So, okay, Devanshi, कोई चक्कर नहीं है. Sorry वरी क्या बोल रहा है. चलो, with this I think we'll call it a day. मेरा plan था to do Fajans rule as well, but it's okay. We did dipole moment inside out. बिल्कुल पूरा खत्म कर लिया. Fajans rules करेंगे अगली बार. ठीक है? I will get the thumbnail changed later on ताकि बाकी बाद में जो लोग देखें अरे यार ये तो Fajan rule तो है ही नहीं. ठीक है? Don't worry about that. Just give me a second. I will show you very quickly the homework question and we'll call it a day. Do you guys have any doubts? Anything on your minds? Anything you want to talk about besides what we already have done so far? How's bonding going? Do you like the pace of this? Do you want me to go slower? Do you want me to go faster? Give me feedback. It will be helpful for me to plan आगे वाले sessions. What do you guys think? सब ठीक चल रहा है? Is it okay? How do you want to change things up? If you want to change, or you're like, नहीं चलता है. What's going right now is good. Please give me feedback on that. Here are a couple of homework questions. Yeah, Radhika, you're welcome. Here you go. पहला सवाल ये, identify the polar molecule among all of these. There are 4 of them. उसमें सिर्फ एक ही है polar, आपको identify करना है. The next one is, which of the following statements is correct? All the compounds having blah blah blah. कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, देख लेना आप लोग, देख लेना. Cool. चलो. Have a good Thursday. I'll see you on Saturday. Saturday को शाम को at 8:30 I'm going to be doing PYQs of कौन सा चैप्टर था? D and F block. Yeah, D and F block पढ़ के आइएगा. D and F block मैंने डिटेल में किया है, पढ़ के आइएगा. 8:30 PM Saturday को I'll be doing PYQs. Please come check it out. Yeah, Fajans rules अगली बार करते हैं. ठीक है, छोटा सा पार्ट है. We'll do it next time. All right.
Great. Telegram पे आपको मिलेंगे notes and all latest updates. And if you haven't subscribed already, please subscribe. If you like the video, share it with your friends. Hit a like. All right. Good night. See you all. Bye. Oh, this is beautiful, by the way. No buffering, huh? Oh, my video is a little weird. But no buffering! That worked. 7 o'clock p.m., 7 p.m. sessions worked. Okay, excellent. Bye. See you.